Hey everyone, welcome back to Investopedia India World of Wealth Creation with Shefali Girl. So guys, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि क्या आप चाहते हैं कि मैं टॉप सेक्टर्स जो इस बजट से बेनिफिट हुए हैं उस पे एक वीडियो बनाऊं एंड आप सबका जो रिएक्शन था वो था यस यू वांट द वीडियो. So here I am with a video in which we would be discussing 8 sectors, 16 stocks जिन्हें आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं क्योंकि बजट 2021 के बाद ये स्टॉक्स बहुत बेनिफिट होंगे. क्या रीजन है मैं ऐसा कह रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी. क्यों मैं कह रही हूँ कि आप इसे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि 16 स्टॉक्स ऑब्वियसली एट वन गो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते. प्लस इन स्टॉक्स ने बहुत रैली भी शो कर दी है. सो टाइमली जब कंसोलिडेशंस हो यू कैन ऐड देम, यू कैन अप्लाई BAH रूल एंड अकॉर्डिंगली आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख के अपने पोर्टफोलियोज में ऐड कर सकते हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स एंड आर एक्सपेक्टेड टू गेट बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ बजट 2021. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. उसके पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए. टू माय साउथ इंडियन फ्रेंड्स आई वांट टू गिव अ गुड न्यूज दैट दे ऑलवेज कंप्लेन that they don't understand Hindi and that is the reason they cannot follow my videos even if they want to watch and cannot follow my channel. So soon I am launching a series purely in English just for my South Indian friends. But this video is obviously a mixture of English and Hindi because this is for everyone. नीचे आपको सब्सक्राइब करना है और अगर कोई सर्विसेज लेनी है लाइक पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, लिक्विड मैनेजमेंट या ट्रेडर इन्वेस्टर प्लान, यू हैव टू गिव योर मोबाइल नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर यू कैन मेल टू अस ऑन investopedia.india0@gmail.com. अगर आपके घर में कोई बच्चा है उसे आपको वरिधि स्टाइल शो एक बार जरूर दिखाना चाहिए. Now let's start. So the first sector and the two from this sector which I think would benefit are automobile sector. The reason I feel automobile sector would be benefited is vehicle scrapping policy. Voluntary vehicle scrapping policy is declared and it aims to phase out old and unfit cars. तो obviously जब आप पुरानी निकालोगे तो नई खरीदोगे, so sales would increase. जो प्राइवेट व्हीकल्स है उनको एक फिटनेस टेस्ट देना होगा बिकॉज अगर जो प्राइवेट व्हीकल ओनर्स है इफ दे डोंट वांट टू स्क्रैप इट so they would have to prove the health of their vehicle is good. जो पॉलिसी है स्क्रैपिंग पॉलिसी, इसका बेनिफिट जिन दो स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा हो सकता है और जो आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए 2021 में, दे आर मारुति सुजुकी एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा. So these two stocks definitely I feel can give you very good returns and should be there in your watch list. The second sector is the health sector. हेल्थ केयर सेक्टर को 2021 बजट ने हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन ने 35,000 करोड़ अलॉट किए हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक. सो इसकी वजह से हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट होने के चांसेस है एंड द टू बेनिफिशियरीज विच आई थिंक यू कैन टेक एन एक्सपोजर एंड कैन एड टू योर वॉच लिस्ट आर फोर्टिस हेल्थ केयर एंड अपोलो हॉस्पिटल्स. So both of them can show a good rally. Keep them in your watch list. Always I tell you don't do bulk buying. बहुत ज़्यादा पैनिक बाइंग मत कीजिए, बहुत सारे शेयर्स मत ले लीजिए. स्पेशली जो थोड़े सस्ते शेयर्स होते हैं आप लोग बहुत बल्क में उठा लेते हो कि बढ़ेगा तो हमें जल्दी प्रॉफिट होगा. So be careful. Now coming to the third sector. The third sector is railways. नाउ रेलवेज को यूनियन बजट में हाईएस्ट एवर अभी तक का हाईएस्ट कैपेक्स प्लान अलॉट हुआ है दैट इज 2.15 लाख करोड़ 2021-22 के लिए. सो डेफिनेटली इस सेक्टर में बहुत काम होने वाला है एंड द टू मेजर बेनिफिशियरीज विच आई फील आर राइट्स एंड IRCTC. सो IRCTC ऑलरेडी बहुत रैली दिखा चुका है, सो यू कैन अप्लाई BAH रूल फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. Now coming to the fourth sector and the two picks from the same sector are infra sector. Infra sector में मिसेस निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है 5.5 लाख करोड़ कैपेक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 एज कंपेयर टू 4.93 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 21. सो डेफिनेटली इस सेक्टर में भी बहुत काम होने वाला है एंड टू मेजर बेनिफिशियरीज विच आई फील आर ABB and Siemens.
गाइस मैं आपको बार बार बोल रही हूँ क्योंकि 16 स्टॉक्स, उसमें से कई महंगे स्टॉक्स भी है, तो आप ये मत सोचिए कि आपको सब अभी एट वन गो में खरीदना है. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए एंड सही रेट्स आने पे यू कैन जस्ट स्टार्ट एक्यूमुलेशन. कमिंग टू द फिफ्थ सेक्टर, फार्मिंग. फार्मिंग में पता है एग्रीकल्चर इकोनॉमी है हमारी, सो डेफिनेटली एग्रीकल्चर फार्मिंग इस पर बहुत फोकस रहता है. फार्मिंग में एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर का जो बजट है, जो उनको इम्प्रूव करने के लिए जो बजट है, दैट इज 16.5 लाख करोड़ अगेंस्ट लास्ट ईयर. ये बजट क्या था आपको पता है? जस्ट नियर 2.83 लाख करोड़. सो द इंक्रीज इज ऑलमोस्ट 8 टाइम्स. तो डेफिनेटली बहुत सारा काम होने वाला है. एंड द टू मेजर बेनिफिशियरीज विच आई फील वुड गेट बेनिफिटेड आर कावेरी सीड्स एंड रैलिस. रैलिस मैंने अपने पहले एक वीडियो में भी बताया था. रैलिस एंटरप्राइज इज अ टाटा ग्रुप एंटरप्राइज एंड कैन डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड. कमिंग टू द सिक्स्थ सेक्टर, एविएशन. एविएशन में गवर्नमेंट अनाउंस्ड टैक्स एग्जेम्पशन ऑन एयरक्राफ्ट लीज रेंटल्स पेड बाय एयर कैरियर्स टू फॉरेन लेसर्स. सो सी मेजरली जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उसमें जो मेजर खर्चा उनका होता है वो एयरक्राफ्ट का ही होता है. द टू स्टॉक्स विच आई थिंक वुड गेट बेनिफिटेड आर ऑब्वियसली द मार्केट लीडर इंडिगो एंड सेकंड स्पाइस जेट. सो नाउ कमिंग टू द सेवेंथ सेक्टर, एनर्जी सेक्टर. एनर्जी सेक्टर में there's a scheme to assist discoms which will be launched with an outlay of over 3 lakh crore. So a good rally is expected and the two beneficiaries would be Tata Power and Satluj Jal Vidyut Nigam Limited, SJVN. सो गाइज मैंने अभी टाटा के 2-3 स्क्रिप्ट्स बता दिए हैं एंड अभी डेफिनेटली टाटा ग्रुप अगेन बहुत ज़्यादा मोमेंटम में आ गया है. बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेक्टेशंस है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है एंड एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ग्रुप ये शुरू से है. Since long it was consolidating and the future outlook for the group is very, very positive. Coming on to the last sector and last two picks for today's video, the sector is housing, and you all know the deduction on payment of interest for affordable housing has been extended by 1 year. So the stocks which I think would get benefited because of this are DLF and Oberoi Realty. So guys, these were the 8 sectors and 16 stocks which I think would get benefited because of budget 2021 and should be there in your watch list. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा. ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.